औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद अली है। हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर उमर हयात। यहाँ रात छा चुकी है पाकिस्तान में। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर दिन जो है वो छा चुका है। जिनसे आज हमारा गुफ्तगू करने जा रहे हैं हम फार्मास्यूटिकल क्वालिटी के छोटे से मौज़ूआत के ऊपर। उनका नाम डॉक्टर उमर हयात है। उमर साहब ने यहीं से एमएससी किया, बाहर जाकर पीएचडी किया, यूरोप ने उनको पीएचडी की डिग्री नवाजा। उसके बाद पिछली 3 दहाई से वो अमेरिका में अद्विया साजी की सनत से वाबस्ता हैं। अद्वियाती उलूम पर आज भी वो पढ़ने वाले स्टूडेंट की तरह पढ़ते हैं। बेंच से उन्होंने काम शुरू किया और चीफ तक पहुंचे। तो आज का जो मौजू है वो चंद 2 सवाल तक है। तो उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू उबैद। मुझे इजाजत दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। तो पहला सवाल हमारा जो है वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के ऊपर कि दवा के अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो क्या है। सर मैं सवाल को साथ एक बांध दूं ताकि आप एक चीज में बता दीजिएगा अपना। हम असल में उमर साहब का जो ओपिनियन है वो जानना चाहते हैं, और यहाँ पे ये ओपिनियन लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो वो रिकॉर्ड पे भी रहेगा, और इस तरह इसकी इंटीग्रिटी जो है बहुत महफूज रहेगी इंशाल्लाह। और यकीनन हमसे भी गलती हो सकती है, बता दीजिएगा तो हम अपनी गलती दुरुस्त कर लेंगे। तो हम कोशिश मगर करेंगे कोई गलती ना हो। तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है किसी दवा का अहम हिस्सा है जो थेरेपेटिक इफेक्ट देता है। वो क्या है, उसकी पोटेंसी क्या होती है, उसका ऐसे कैसे नापा जाता है, उसकी पोटेंसी की एडजस्टमेंट बैच में कैसे की जाती है, उनका क्लिनिकल रेलेवेंस कैसे कंट्रोल किया जाता है, कि मतलब कैसे समझें कि वही क्लिनिकल इफेक्ट देगा जो आपने प्रॉमिस किया है। तो पहला सवाल हमारा ये है। और दूसरा सवाल जो है हमारा वो है क्या कहते हैं उसके ऊपर जिसमें हम बात करेंगे दूसरे सवाल में कि आपका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्वालिटी एश्योरेंस वालों से क्या ताल्लुक होता है, और क्वालिटी एश्योरेंस का नीचे क्या ताल्लुक होता है, प्रोडक्शन से क्या ताल्लुक होता है, इंजीनियरिंग से क्या होता है। तो ये है सवाल। तो पहले पर हम चलते हैं। सर पहला सवाल जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के ऊपर। Thank you, Beth. I think what we will do is we'll talk little bit about quality. और जैसे हम और सब जानते हैं, can you please put on mute? Thank you very much. Because there was echo, and thanks for putting on mute. हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी की जो डेफिनेशन है वो हम सब समझते हैं कि ड्रग जो है वो प्योर होनी चाहिए, वो सेफ होनी चाहिए, वो एफिकेशियस होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, और वो मीट करे एक्सपेक्टेशंस की, पेशेंट्स की और डॉक्टर्स की. ऑफ कोर्स दोज आर द टू स्टेक होल्डर्स. डॉक्टर्स डायग्नोज इट and then prescribe the drug, and they expect that it will do the job as it is expected. ठीक है. और same thing for patient. He is sick, he really want to recover, और उसकी expectation ये है कि now I took the drug and in few days I will be recovered. ठीक है. दूसरे लफ्जों में हम ये भी उसकी एक definition कही जाती है कि the performance of the drug should be what it claims. अब जब बात आती है क्लेम्स की, तो हम क्लेम तो हम सब लोग करते हैं कि ये सेफ ड्रग है, ये हाई क्वालिटी है, ये इफेक्टिव है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये प्योर है. लेकिन क्वेश्चन ये है कि डज इट रियली परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द क्लेम्स वी मेक. ठीक है. बात ये है कि अगर तो वो ड्रग हाई क्वालिटी की है तो यकीनन पेशेंट विल बी सेटिस्फाइड एंड डॉक्टर्स विल बी हैप्पी ऑफ द आउटकम. लेकिन ये है कि अगर वो ड्रग डिफेक्टिव है, then of course somebody can lose the life. Okay. And that's a big question. Okay. And doctors would be disappointed and somebody will lose the life. जब हम ये कहते हैं कि somebody lose the life, think of this way. That person can be or will be a future president. That can be Dr. Qadir. That can be Dr. Abdul Salam. Then can become Imran Khan. That can become Ubaid, that can be me, that can be you, that can be the engineer. So basically, the patient who passed away was not simply a patient. It was the hope of the future. It was the contributor to the economy of the family, the community, the country. So what I mean is basically
कि क्वालिटी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सोशो इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो बात आ जाती है कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, हम ये समझते हैं कि let me take back actually to the one of the ayat. I'm not a religious scholar, but I think it's a good ayat. जब हम ये कहते हैं कि जी एक इंसान का कत्ल करना जो है वो पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है, तो लेट मी एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट वो सिर्फ गोलियों वाला कत्ल नहीं है या खंजर वाला कत्ल नहीं है, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। तो व्हाट वी डू as a pharmaceutical professionals, as a regulators, as a doctor, or anybody who is related to the healthcare profession, either we contribute to save the life or improve the quality of the life, or we contribute to the other way around, which I just mentioned. It's a basically murder of a human being, and we are contributing to the murder of the humanity. तो जब भी हम सोचें तो please keep that pretext in your mind when you go to your job or when you prescribe a drug, because this is a much bigger picture. Let's not focus on our tiny personal gains. Think what damage we can call if we compromise our job responsibility. Other way, I will say the quality is a good business practice. Obviously, ethically and morally, it's a great and noble cause. We are saving the lives of the people and improving the quality of the life. Now, I think I will address the questions Dr. Obad has raised. We will. सर वो पूछना ये था कि जो अब हम जब इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो हमें पोटेंसी एडजस्ट करना होता है बैच बनाने के दौरान, हम उसका स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं, उसकी डोजिंग देख रहे होते हैं, उसका एसे वैल्यू देख रहे होते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन देख रहे होते हैं। तो इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे एक बैच के अंदर बनने वाली दवा को जिसमें 90 से 110 लिमिट है अपनी अपने क्लिनिकल रेलेवेंस के साथ। So let me touch on that one by one. I think there are several components to it. One is obviously purity, the assay as is, assay on anhydrous basis. And what I mean is how we are going to touch it. We are going to touch the API first, and then we will touch the performance of the drug product. Because what doctor prescribes and what patient takes is a drug product, right? However, what goes in and which has the pharmacological activity is basically the active pharmaceutical ingredient. So we will start with the active pharmaceutical ingredient. So I will quote also the famous garbage in, garbage out. If you are not putting the high quality pharmaceutical ingredient in the product, it's not going to give you the performance. So that's why the quality of the pharmaceutical ingredient, the active pharmaceutical ingredient, is very important. So as we were talking like purity, assay as is, assay anhydrous basis, and then we will talk about the specifications, and then of course how we do the potency adjustment to make sure the quantity of the active pharmaceutical ingredient is in the product जो कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो डॉक्टर अवैध कह रहे थे कि आप पोटेंसी एडजस्ट कैसे करेंगे, कितनी क्वांटिटी जो है बैच में जानी चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, यू नो, इट्स नॉट इनफ कि अगर दो बंदे आपको कह दें कि जी ठीक है हमने 1 किलोग्राम एपीआई डाला है, दैट्स नॉट इनफ. We will have to test it, and then we will talk about the testing, why the testing of the product is very important to assure the quality of the product, and that's what we call the specification. So let's start with the quality of the active pharmaceutical ingredient. तो एक component जो होता है वो होता है identity. Look, I mean, I have a background in chemistry, chemical engineering, and business. So I will try to touch upon the science, technology, and the business aspect of it. Believe me, I'm very pro to the science, very pro to the industry, but also keep the eyes on the compliance and regulatory affairs. तो बात होती है आइडेंटिटी की। तो सबसे पहली चीज जो हमेशा की जाती है वो होती है, इवन इफ यू लुक एट द स्पेसिफिकेशन, जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है आइडेंटिटी, ठीक है। अब आइडेंटिटी, व्हाई वी डू द आइडेंटिटी? I mean, of course, to avoid the cross contamination. Can we do only identity and rely on the certificate of analysis of the manufacturer? And the answer is yes, only during the development. Okay. Can we continue to rely on the identity? Absolutely not. You need to do the full testing. Full testing means एक तो वो मैन्युफैक्चरर है वो आपको टेस्ट करके देता है और उसके बाद वो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इशू करता है। दूसरा ये है कि आपने भी उसको टेस्ट करना है, खा वो इन हाउस कर लें, खा वो किसी और पार्टी से करवा लें।
लेकिन you need the two certificate of analysis. One certificate of analysis is not going to be the enough. ठीक है, or you continue to do it all the way through the later development and early stage of the commercial manufacturing. अब उसमें मैं एक और टॉपिक के लिए आपके लिए just for food for thought के लिए छोड़ रहा हूँ कि you do the qualification of the supplier, and there is a whole process how you qualify the supplier. You visit them, you order them, you receive the few lots, and then after testing certain number of lots, and there is a lot of, by the way, internal versus the external like the quality procedures. तो आपका इंटरनल प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन दैट नीड्स टू बी ब्लेस्ड बाय द रेगुलेटरी बॉडी कि जी इतनी हम ये करेंगे और उसके बाद इतनी लॉट्स से उसको टेस्ट करेंगे और उसके बाद वी विल डू जस्ट द आईडी, ओके, और इवेंचुअली 6 months लेटर और आफ्टर 10th बैच डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्शन आप फिर जो है उसकी फुल टेस्टिंग करेंगे. सो यू डोंट लीव like just on the ID. Now, why I'm saying this, because I am also looking from the pharmaceutical industry perspective. यही काफ़ी नहीं है कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करें या हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उसको अवॉइड करें. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अफोर्डेबल ड्रग्स प्रोवाइड करें. ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि डिफेक्टिव ड्रग से लोग मरते हैं, ऐसा भी है कि लोगों के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि लोग उस ड्रग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं. एंड वी लूज आल्सो लॉट ऑफ आइंस्टाइन्स एंड डॉक्टर कदीर्स एंड so forth just because of the poverty. UNO has listed us as a poor nation. We are. Let's accept that the fact we have a 250 million peoples. Not everybody has the affordability. तो जहाँ कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है to bring the cost of the goods down, please do so, but based on the scientific evidence. You can't do it just because emotionally you want to do it or there is a business interest in it. That's not enough. So it should be supported by the science. So that's what I'm talking about, the identity. Next is the purity. Sorry, Dr. Obaz, you have a question? Thank you. So next is the purity. Of course, the drug needs to be pure. What I mean by purity in some way is also listed as a factor for the safety. क्योंकि जो प्योरिटी के अलावा जो उसमें चीजें होती हैं वो होती हैं impurities. ठीक है, अब we all knows कि how the purity is tested. I mean simply in the most of the cases the purity is tested by the HPLC. और हम सब जानते हैं कि HPLC में there is a main peak and there would be small peaks of the impurities. और जो purity है उसको simple way of calculation is you take the area of the main peak and you divide it by the total area of all the peaks together. Okay. Now, is that a good enough, even as a business, to buy a pharmaceutical ingredient, active pharmaceutical ingredient? The answer is absolutely not, because purity means nothing other than the organic or the method what you have validated for. All it doesn't count for the elemental impurities, mean the heavy metals. It doesn't count for the moisture. I mean, you run the HPLC. If you can capture the water, good luck, but I don't think you're going to do that. It doesn't capture any of the counterions or anything like that. So even if somebody tells you I have a highly pure drug, means nothing when it comes to the purchase of the drug. I mean, you can't pay. I mean, he can sell you the water. I mean, honestly, you may be purchasing a drug for $25,000 a kilogram based on the purity because he shared with you the chromatogram, but he may be selling the 3% of the water which is in it. So that's why the purity, of course, I want to also basically for food for thought, and I will continue throughout my discussions. What are other areas basically which are very important, which are linked to the quality of the product, is the validation of the methods. The methods you use should be validated. What it means is basically, I always use this quote as well. In the God we trust, rest need to prove the show the data. Okay. So basically for the purity, not only it's important that you have the chromatogram और उसमें आपको purity जो है वो 99% या जितनी भी वो show करें, but you also need to have the method which you can count on and you can rely on. ठीक है, the data is as good as the methods are, जो भी आप methods of testing जो आपको use करें.
So that takes us to the next quality parameter, which is the assay. Now assay as is, अब हम सब लोग ही जानते हैं कि ऐसे हम कैसे determine करते हैं. Normally we test against the reference standard, and we calculate basically the area percent of the both sample as well as the standard peak, and then we calculate the assay. Now the assay as is basically tells you the some sort of the contents of the active pharmaceutical ingredient, and it minus out the everything else. It minus out the elemental impurities, it minus out the moisture, it minus out the counterions or anything else which you may have as the impurity. And when we talk the impurities, there are the organic impurities, there are inorganic impurities, and so forth. Dr. Bell, please let me know if I'm going beyond the time in terms of the speed. Thank you, sir. We have 5 minutes more, sir. तो वो जो essay as is जो है, it's a very critical parameter, and that's what basically normally you will use to buy your the active pharmaceutical ingredient, because that will give you the idea how the pure what are the contents of the active moiety. There is another parameter we call also the assay on dry bases or assay of the free base, जिसमें हम counterion को eliminate कर देते हैं, ऐसे ऑन अनहाइड्रेस बेसिस जिसमें हम वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं, और ऐसे ऑन फ्री ऑफ द सॉल्वेंट और द वाटर. सो दैट्स अनदर like the assay we use. Now the assay of as is, जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो contents of active moiety हैं, let's say it's 95%, everything else 5%, it can be XYZ, it can be everything excluding the active moiety. So that takes us basically how should we use. So now we were talking, this was all about the active pharmaceutical ingredient. Now we want to manufacture the drug products which will be used by the patients. ठीक है, तो अब उसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि how we use, how much drug we should use to make a batch. ठीक है, और how we should do the potency adjustment. ठीक है, क्या अगर हम उसमें हमारा जो बैच फार्मूला है उसमें लिखा हुआ है कि जी आपने 5 किलोग्राम जो है वो एक्टिव डालना है, ठीक है, तो क्या हम 5 किलोग्राम मेजर करके डाल दें? इज दैट इनफ टू क्लेम आवर लाइक द लेबल क्लेम द स्ट्रेंथ कि जी ये इसमें होगी लेट्स से 100 मिलीग्राम पर टैबलेट है, तो विल दैट मेक द मीट द क्राइटेरिया ऑफ द लेबल क्लेम? द आंसर इज नॉट एट ऑल. अब आपको देखना है कि उसका एसए वैल्यू, एसए एज इज वैल्यू जो है वो कितनी है. लेट्स से इट्स 95%. अब आपने अगर 1 किलोग्राम लेना है तो यू विल नॉट मेजर दी 8 किलो मतलब 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, राइट. तो उसको आपको 1 पॉइंट समथिंग मेजर करना पड़ेगा, और इसका तरीका बड़ा सिंपल है कि जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है लेट्स से 1 किलोग्राम, उसको डिवाइडेड बाय 0.95, क्योंकि वो 95% प्योर है, तो उसका नतीजा तन जो जवाब होगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.05 किलोग्राम होगा. So that's the quantity you need to make. Now, very interesting question or thought. Basically, जो आप additional 0.5 kilogram डाल रहे हैं, that is treated as an excipient, like a non-functional excipient. ठीक है, अब देखें कितनी clarity कितनी है. Science में there is not too much ambiguity, by the way. ठीक है, जैसे 2 + 2 it's a 4. ठीक है, there are the areas the science is not clear about, but they are constantly working to make that clear. But the things which go into the market, for God's sake, things are very clear. ठीक है, वहां कोई ambiguity नहीं होती, otherwise that product will never see the market. ठीक है, तो उसमें ये है कि अब आप जो है उसकी पोटेंशियल एडजस्टमेंट करें. ठीक है, तो 1.05 किलोग्राम डालो, जो 0.5 किलोग्राम है वो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं. ठीक है, समवेयर यू नीड टू मेक द एडजस्टमेंट. ठीक है, तो वो जो 0.5 किलोग्राम है दैट इज ट्रीटेड एज अ एक्सिपिएंट, क्योंकि वो उसमें मॉइस्चर है, वो वाटर है. ठीक है, वो एलिमेंटल इंप्योरिटी है, तो वो उनको ये समझते हैं कि लेट्स टेक इट एक्सिपिएंट. लेकिन आप एक्सिपिएंट्स भी डाल रहे हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट जो एपीआई की आपने पोटेंशियल एडजस्टमेंट किया, एट द सेम टाइम यू नीड टू रिमूव सम ऑफ द एक्सिपिएंट, जो कि 0.5 किलोग्राम आपने लेस डालना है. ठीक है, ताकि जो एक्सिपिएंट टू एपीआई रेशियो है वो सेम रहे. ठीक है, बिकॉज इन सम केसेस those adjustment may have the performance issue. Not some of the excipients are obviously bulking agent, some of the excipients are the processing excipients, I call it, and some like the magnesium stearate, purely lubrication to run the tablet process smoothly,
ठीक है, सम ऑफ द एक्सिपिएंट्स आर द फंक्शनल एक्सिपिएंट्स। तो नॉर्मली जो पोटेंशियल एडजस्टमेंट जब आप 0.5 किलोग्राम ज्यादा एपीआई मेयर कर रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम 0.5 किलोग्राम जो है ना अपने लेस एक्सिपिएंट लेना, तो उसमें यही कोशिश की जाती कि दैट शुड बी नॉन फंक्शनल एक्सिपिएंट एंड शुड बी इन मेजर क्वांटिटी, ताकि उसकी चेंज से ड्रग की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट ना करे। So that's how we adjust the potency. Now, the question is, because the label claim is already always like 190 to 110%, that doesn't give you the leverage कि जी आप जो है वो lower limit लेके तो उसके मुताबिक उसमें जो active pharmaceutical ingredient डाल दें. That is not permissible. You need to target the 100%. ठीक है, वो जो specifications हैं, by the way, that's the specifications for to calculate, I mean, to accommodate the variability in your method. To the line lysis some way may happen. I mean, spillage can happen, or there may be some like API is so powdery and there might be some segregation, etc. लेकिन दैट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ 90 to 110% बाय नो मीन्स कि आप इंटेंशनली जो है वो 90% की तरफ चले जाएं क्योंकि यू वांट टू सेव द मनी, डोंट डू दैट, दैट्स अ क्राइम, ठीक है। तो लेकिन ये है कि यू नीड टू टारगेट द 100%, सो दैट्स हाउ basically we do the potency adjustment and make sure that drug right amount of the drug is right amount of the active moiety, I will use the word because that's what is responsible for the therapeutic activity. So my apologies because it's not a public discussion, it's more for the professionals, so that's why there is a lot of technical language. So now you have made the product, okay, of course that product need to be tested now, and for on the testing point of view we do the same thing. We do the assay, okay, of the drug product, and there is a limit like a 90 to 110. But let me point out another important thing. There is a regulatory requirement and there is a moral and ethical requirement, okay. So you will see in my part of the world, very often we have two types of specs. We have the regulatory specs which we will submit to the regulatory body, but then we have a manufacturing specs which we want to have the high quality. A lot of companies do that, and normally the manufacturing specs are tighter than the regulatory specs. So you can imagine the ethical ground we take. We ourselves impose on ourselves the tighter specs, that we are not going to release the batch if it doesn't meet their specs, independent of what the regulatory body requirement is. Okay. So that's the mindset we need to generate basically. And that's how we can assure what we were talking the earlier, कि जी अगर कोई बंदा बीमार है तो वो he takes the drug and he now of course he is counting the days basically. Every day on the bed is going to impact the economics of the family, of the community, or even of a country. We need the people who are healthy individuals, healthy family really contribute towards the economics of the country. So we should always keep that in mind. Acha, now the question is, if I have tested for the assay, is that enough? It has met the label claim, but is that enough? The question answer is no. That alone is not enough. It gives you the indication you have the enough contents, but it doesn't tell you that in every tablet you have the same contents. And that's why there is another parameter, what we call the content uniformity. We do not want to make sure only just there is enough, because as say sometimes they take the composite of the 5 or 10 tablets, which doesn't tell you what is in each and every tablet, because patients are taking one tablet a day, and that tablet also need to be assured there should be enough contents of the drug. तो उसके लिए हम फिर ये करते हैं कि we do the content uniformity, and as we all know that content uniformity is done on 20 tablets, but if it fails then we have the level 2, level 3, and so forth. So what we are trying to do by going level 1, level 2, 3 is honestly trying to see if there was any one tablet which was out of spec. Was that the only one? What is the population of the bad drugs? Okay, and by the way, regulatory body and industry allows you a certain leeway. Okay, so we don't want to basically make it. I mean, the ultimate goal is to make sure there is a supply of the drugs.
We can't hold every batch because it's failing one tablet. Okay. Second goal is to make the sure that the drug which goes to the patients is a quality drug. Okay. And third, it should be cost effective. We don't want to impose so many systems that yes, you can make the drug, but it's gonna cost you so much that nobody can afford it. So that's why I think we should. I was talking to Dr. Abad that we should also think of like doing the continuous process to bring the cost of goods down. But anyway, so we do make sure that the content uniformity meets the acceptance criteria. I mean, there is a lot of different ways, like the content uniformity by weight, because once the drug contents go to more than 25%, and that's very important. I mean, regulatory bodies as well as the science, they give you the leeway, but you need to take the very scientific sound approach to utilize those benefits. So now we move to, is that enough? I mean, we have assured there is a contents, enough contents, what we need. We have assured that in every tablet there is the contents. Now the question is that enough? The answer is no. We need to also, that gives you the guarantee of the contents. It doesn't give you the guarantee of the performance. So now we need to do the dissolution testing. And that's why, and then of course, once we do the dissolution, you have the profile. You show like how the drug is released from the tablet, goes into the system. Now, when it goes into the system, we leave it to the system. It's a human biological system. By the way, that doesn't mean we leave it to like on the fate. No, because that system, biological system, has been tested in clinical studies. We know once it reaches to the system will take over, and that system takeover and performance is very much guaranteed during our clinical studies. So that's why those are the studies which are the basis for the approval. So we now the question is that enough? We have assured that there is enough drug. We have assured that every tablet has the drug. We have assured that the dissolution works perfectly fine. We know that clinical studies has been done, so biological system will perform as expected. So is that enough? The answer is yes, but it's not enough yet. We also need to assure the performance of the drug over the time. So that's where the stability come into questions. Now, those are the specs. So we have the specs, manufacturing specs, we have the regulatory specs, we have the stability specs, which defines basically the shelf life. The stability specs certainly need to meet the regulatory specs. Okay, you can have the tighter manufacturing specs because sometimes drug degrades over the time. So that's another reason basically why people have the tighter manufacturing specs, because they want to release with the tighter specs and then they leave to the stability, but at the end of the shelf life they still meet the regulatory specs. So that's how the we need to also assure the performance of the drug. Now, why all this is important? Like the contents are important, the performance is important, shelf life is important, because the there are the by the way there are the drugs for the narrow therapeutic windows. You don't want to put too much either, because sometimes people say, okay, I'm going to put the overage, and at the end of the shelf life it will still meet the acceptance criteria. No, that's not allowed either, by the way, because some of the degradation products can be cytotoxic or the genotoxic or the toxic for that sake. So that's why when people talk about the safe drugs, that means all the impurities should be not be there. I mean, it should be pure. It should be stable as well. So that's why it's a very important to assure the contents of the drug, the contents in every tablet, performance of the drug, performance over the shelf life, and that wholesome makes basically the quality of the drug from which you can expect therapeutic value which you are expecting. So that I think Dr. Obad addressed our first question. डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ये हम आज पहले सवाल तक महदूद रखते हैं। मेरे पास कई सवाल आ चुके हैं। हालांकि हमने लोगों से ये कहा है, सोचा था कि आप वीडियो देखने के बाद सवाल कीजिएगा तो हम अगले सेशन में जवाब दे देंगे। तो मैं से 2 सवाल ले लेता हूँ और ताकि रियल टाइम में, और इसके अलावा अभी सर ने एपीआई की बात की है। हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक्सिपेंट पे भी बात करेंगे, मशीनरीज पे भी बात करेंगे, प्रोसेस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला सवाल सर है, व्हाई इज इट नॉट ट्रीटेड as overage? Kindly help understanding beside water content and the chemistry behind it.
ये यासिर याकूब साहब है सर, उन्होंने सवाल लिखा है। ओवरेज जो है ना, it's allowed by the way, but it's difficult to justify. FDA or even the EMA, they are not happy. I have done this. I have submitted the INDs where I have justified the overage. Overage is allowed, but you need to. By the way, degradation is not a justification of the overage. You say, oh, by the way, because my formulation is not stable, so I'm gonna put the high quantities because I know it's a degrade. The justifications are normally the line losses. यानी Does that प्रोसेस लॉस की बात है। यस process? सर। Yeah. Yeah. मैं आज सेकंड क्वेश्चन फिदा मोहम्मद खान मरवत हैं। भाई ये बहुत सारे सवाल हैं, ये मैं अभी नहीं कर सकता, ये बाद में करूंगा। एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपका जो पहला सवाल है, इज द प्लस माइनस 10% रेंज इन एसे गिवन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एरर ओनली और एरर इन एनालिटिकल मेथड आल्सो काउंटेड? फिदा साहब अपनी बात It's a sum of all. It's a sum of all, basically. So that's, by the way, it's not always the case. It's, you may have some drugs where you need to tighten the specs, okay, but it's an overall sum of all. I will say it may be the errors during the processing, it may be the error during the analytical method. So it's a sum of all. ठीक है सर, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ सर। एट व्हाट स्टेज मैन्युफैक्चरिंग द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड? नॉर्मली इट इज डन ड्यूरिंग कंप्रेशन स्टेज। Should it not be done after compression, after completion of mixing? So normally the content uniformity is not an in-process test. So you can't do it during the compression. It's a release test. You don't need to do on the stability because you have already established. And I've seen a lot of people doing it. It's a nonsense. So you do it at the release. When I say the release, ideally for the tablet, in the case of the solid dosage forms, by the way, you can do it even on the bulk, and then after you package, you don't need to do it because during the packaging, it's a non-critical function. All you are doing is putting in the bottles and sealing it. So you can do it on the bulk. So you can do it on the bulk release, and then you don't need to do it on the stability. सर हम इसको क्लोज करना चाहेंगे, तो कोई समरी आप कहना चाहें, लास्ट वर्ड्स? लास्ट वर्ड्स मेरा ये है कि why it is important, why the regulatory bodies emphasize on the quality. देखें, जो अर्ली डेवलपमेंट होती है तो फोकस होता है टॉक्सिकोलॉजी में, सेफ्टी, ठीक है। जब आप फेज 1 टू फेज 2 जाते हैं ना, फेज 3 जाते हैं, तो एम्फेसिस होता है क्लिनिकल एफिकेसी, ठीक है। नोबडी, आई मीन, वी केयर अबाउट द क्वालिटी बट नॉट मच, ठीक है। जो ही आप लेट स्टेज डेवलपमेंट में आते हैं तो पूरा एम्फेसिस जो होता है वो होता है क्वालिटी पे और सीएमसी पे। 75% of the NDS delays are not because of the clinical, not because of the safety, because of the CMC and quality. क्योंकि उसकी वजह ये है कि clinical study you do once, toxicology study you do once, quality CMC you do every time you make a batch. So that's why the FDA's focus switches from the early development towards the commercialization, and they purely focus on the quality then, okay, not because of the clinical, and because this is the only thing which we will continue to. The other thought I really want to share, and this has been like a very recently, probably I'm getting older, and that's why we are getting close to, we're gonna all meet Allah. The one question I have been, I mean, Dr. Vaid, myself, we have been, and Dr. I will have to mention Sultan here. He is the one who launched this trainings in Pakistan. He's very old now, but please take the advantage. He is still in Karachi. तो वो ये था मेरा concept कि what kind of trainings we need. GMP trainings, management trainings, quality trainings. But let me give you today another perspective. We only need one training. And that training is training to be a good Muslim. That's it. सच बोलना है, खुलूस नियत से काम करना है, पूरा वक्त देना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, मिस प्रिंट नहीं करना, राइट चीज लिखनी है, ठीक है, राइट क्वांटिटी लिखनी तोलनी है, ठीक है। यही है ना, अभी हम पोटेंसी एडजस्टमेंट वगैरह की बात कर रहे थे कि इतनी दवा डालनी चाहिए। दैट्स इट। सच बोलना है, सच लिखना है, दैट्स इट। दैट्स ऑल द ट्रेनिंग वी नीड। वी डोंट नीड द जीएमपी ट्रेनिंग, वी हैव द जीएमपी ट्रेनिंग, ठीक है।
मशवरा करना है, दूसरे से पूछना है, कोई चीज़ हाइड नहीं करनी, ओपननेस करनी है, एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है, एक दूसरे से हेल्प मांगनी है. Mashallah, what a principles we have. So that's the only training we need, by the way. No other training, not even this training, to be honest. चलें, जज़ाकल्लाह, सर फिर आपका बताएं. बहुत शुक्रिया, और जितने सवाल वापस आए हैं हमारे पास, इंशाल्लाह उसका हम बाद में जवाब दिलवा देंगे. जी, और मुझे उम्मीद है कि उमर साहब ने पहले भी, जब भी हमने इनको पुकारा है, उन्होंने फौरन जवाब दिया है, और ये सेशन अच्छा रहा. आप लोगों के पास मौजूद रहेगा ये तमाम मामला, और इनके जवाब, इनका ओपिनियन एक साइंसी ओपिनियन है, डेवलप वर्ल्ड से ओपिनियन है. मैं उमर साहब का दिल से शुक्रिया करता हूँ, और सर उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सिर्फ एक मैसेज के ऊपर जो हमने फेसबुक पे लगाया उस पर लोग जमा हुए, और मैंने देखा 24 लोग तक देख रहे हैं, 24. तो बहुत शुक्रिया, आप लोग शेयर कीजिएगा आपस में, लोगों से जो भी मालूमात हो और जो सवाल हो भेजिएगा. इंशाल्लाह उमर साहब को हम फिर तंग करते रहेंगे. आपका बहुत शुक्रिया. अस्सलाम जज़ाकल्लाह. वालेकुम. Thank you. Wa alaikum अस्सलाम salam. Thank you. वालेकुम.